Hello, friends, welcome to Quest for Knowledge. My name is Naghma, and today we are going to learn English. Very famous poem that is When You Are Old. जब आप बूढ़े हो चुके होंगे. Like that, When You Are Old by W.B. Yeats. So, W.B. Yeats is William Butler Yeats. So, let's know something about the author first. जो आयरिश ये जो है एक आयरिश पोएट हैं ये इज़ अ आयरिश पोएट from 1865 to 1939. He is one of the famous figures of 20th century, especially for the literature. इनकी जो पहली वाली पोएट्री है वो सब एक सेल्टिक ट्यूलाइट यानी कि आयरिश लिटरेरी रिवाइवल, आयरिश की जो लिटरेरी है उसको ज़िंदा करने में उनकी पोएट्री थी. इनकी जो पोएट्री थी वो कॉम्बिनेशन थी पूरी की पूरी आयरलैंड के बारे में, कभी हिस्ट्री के बारे में, कभी उसकी मिथ्स के बारे में, कभी आयरलैंड के हीरोइक फिगर्स के बारे में वो पोएट्री लिखा करते थे. सो दैट इज़ वाई हिज अर्ली पोएट्री इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्टिक ट्यूलाइट or the Irish literary revival, and it uses the history, myths and heroic figure of Ireland. ईट्स जो है वो प्लेज भी लिखा करते हैं एंड ही इज़ वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द एबे थिएटर इन डुबलिन एंड वॉज विटनेस टू द रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स इन आयरलैंड. जो कुछ भी आयरलैंड के जो रेवोल्यूशंस थे पॉलिटिक्स में ये बहुत ही इन चीज़ों को विटनेस करते हैं अपने प्लेज में, अपने पोएम्स में. और ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1923. उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था लिटरेचर में 1923 में. Later, under the influence of Ezra Pound, he began to write modernist poetry. He is one among the great love poets of the world. वो तो शुरू में क्या करते थे, मिथ्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, हीरोइक फिगर्स के बारे में लिखा करते थे. खासकर जो कुछ भी आयरलैंड में चल रहा होता था उस बारे में लिखा करते थे. जब से उनसे एजरा पाउंड से उनकी जो इन्फ्लुएंस उन्होंने हासिल की तब से इन्होंने पोएट्स लव पोएम्स भी लिखना शुरू कर किया. एंड उसके बाद उनको ही इज़ नोन एज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लव पोएट्स इन द वर्ल्ड. उनको ये खिताब भी मिला. सो अब ये जो लव पोएम है यहाँ पे जो स्पीकर है ही इज़ द लवर. ओके ये किसी को चाहते हैं. ओके इमेजिन हिज बिलव्ड इन द फ्यूचर व्हेन शी इज़ ओल्ड एंड रीडिंग द बुक ऑफ पोएम ही इज़ नाउ राइटिंग. अब लिख रहे हैं मगर ये अब लिख रहे हैं ये सोच के कि ये जो उनकी जो प्रेमिका है वो जब बूढ़ी हो गई होगी तब अगर उसको रीड करेगी तो कैसा लगेगा. Okay, so the writer is writing now in the present, but in the manner he is writing that the lover should read it when she'll be in her old age. Okay, so आपको समझ आएगा. That is why this is when you are old. And imagines, okay, in this love poem the speaker who is the lover imagines his beloved in the future when she is old and reading the book of poem he is now writing. Reading the book she will remember the past. क्या होगा जब वो बूढ़ी होकर ये लेटर पढ़ेगी जो अब लिख रहा है, उसका जो स्पीकर है, जो उसका चाहने वाला है वो अब लिख रहा है ताकि उसकी जो माशूका है वो अब बूढ़ी होकर पढ़े. तो वो जब बूढ़ी होकर पढ़ेगी तो उसकी पूरी धुंधली यादें जो है ताज़ा हो जाएगी और वो तब उसको समझेगी. जब पढ़ के वो अपनी जब वो पढ़ेगी तब शी विल अंडरस्टैंड दैट somebody has really loved him truly. And her youthful beauty, the many who admired her, while the others loved her physical beauty and grace, only he loved her soul. Her soul's search was something meaningful. However, she will also feel sad that the love also vanished. जब वो पढ़ेगी तो उसको एहसास होगा कि इतने सारे लोगों में बहुत सारे लोगों ने उसे एडमायर किया, बहुत सारे लोग उसके बहुत सारे चाहने वाले थे मगर कोई तो था जो उसकी रूह को यानी कि नॉट द फिज़िकल ब्यूटी बट जो उसकी सोल को चाहने वाला था. जब वो सोल को चाहेगा तो चाहे वो बूढ़ी हो, चाहे वो उम्र के साथ जितना भी उसका जो चेहरा है वो बदले मगर प्यार नहीं बदलेगा. सो दैट इज़ वाई ही इज़ ट्राइंग टू मेक हर टू नो दैट हाउ मच he loved her
soul, not the physical beauty. दो चार लोग आए थे, but they used to compliment for the physical beauty, but I was the one among them who loved you truly, who loved your soul. This is what the poet is wanting to say in his poem to her beloved one. And later it makes that woman to realize that the love would have been vanished. She lost the wonderful opportunity. So now the love would have also been disappeared. So here the love is the way it is being personified in the last lines. So this is all about the author. And so now let's move on to the poem. तो पोएम को हम जानने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं. तो क्या है, ये जो पोएट है ये रियल में उनकी जो ट्रू स्टोरी है वो लिख रहे हैं. ही इज राइटिंग इट हिज ओन ट्रू लव स्टोरी. It is being said that he met to Maud Gonne, a lady, an actress, and an Irish revolutionary in 1889, and he fell in love with that girl. But that woman, that actress, she got married to Major John McBride in 1903. So by this incident, because of this incident, it inspired Yeats to write this poem that how he loved. वो कहते हैं ना, एक दफ़ा प्यार की ताकत की कुछ और है, इस तरह का किस्सा है ये W.B. Yeats का. So now he is writing because the girl, she got married to somebody else. So this inspired him to write this poem. So now let's understand. He has written this poem by keeping imagination as the he is that the woman will be reading, that I mean the lover to whom the poet loved so much will be reading this poem when she will get old. But now she is young, but it is being written in that form that she will be she is going to read it in her olden days, in the future. So let's get started. When you are old and grey and full of sleep. So it means it is, he's trying to represent her old days. So when the lady will become old, her hairs will become grey, and she, how the old woman will be, they'll be like, most of the time they'll be sleeping, resting themselves. So this line is representing her old age. And nodding by the fire, take down this book. So the lady will now sit in a chair near the fire and she'll be nodding. In olden days क्या होता है, थोड़ी बहुत शिवरनेस होती है बॉडी में, तो उस तरह की वो अपने आप को हिलते हिलते अपना वो जो किताब है वो उठाएगी. एंड स्लोली रीड एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक. यानी कि वो अब जब बूढ़े हो जाते हैं, they will read slowly, उनकी आंखें धुंधली हो जाती हैं, so they will read slowly and they dream of the soft look. And then while reading, what happened, the flashes, it will flash the memories of her youth. तो उनकी जवानी के दिन जो हैं उनको नज़र आएंगे. When she used to have a soft look, your eyes had once and their shadows deep. So now she is in the very full of memories of her youth, when she used to have a very beautiful and soft look, and many memories of the youth. So this all the that is. And now, how many loved your moments of glad grace? So because of that physical beauty, because of that kind, the very beautiful appearance, many of them used to admire to the grace of that lady, and loved your beauty with love false are true. बहुत सारे थे जो जिन्होंने आपकी जो ब्यूटी है उसे एडमायर किए हैं, उसको अप्रिशिएट किए हैं, उसको but we don't know whether the love was true or false, but many of them used to admire. And but one man loved the pilgrim soul in you. But he is describing to himself, but आपको कई लोग ने आपको सराहा है, many of them tried to propose, but I am the one who loved you, not for the physical beauty as other did, but for the soul which is there in you. And love the sorrows of your changing face. चाहे आप उम्र के लायक जितने भी आपकी फेस में
changes आ जाए, dullness आ जाए, but my love will remain same. Why? Because I never loved you with the physical appearance, the way you are, but the way your soul is. So that my love would have never, my love will never change with your changing face. जिस तरह जवानी घटती जाती है उतना डलनेस बढ़ता जाता है, बट मैं आपको जो है, आई लव यू फ्रॉम द सोल सो दैट माई लव विल बी अनचेंजिंग. एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स. सो अब वो रियलाइज करेगी, व्हेन द वुमन विल रीड दिस वन, शी विल श्योरली, आई मीन द लवर, शी विल श्योरली रियलाइज एंड शी विल bend down near that fire, near that ember, and she will murmur a little sadly. अपने आप से वो धीमे अल्फाज में बात करेगी, थोड़े सैड में बात करेगी. how love fled and paced upon the mountains overhead and hid his face amid a crowd of stars. तो वक्त जाते 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 क्या हो गया, वो मोहब्बत भी दूर होती चली गई, पहाड़ों के पास जाकर यूं ही वो क्या हो गई, सितारों में जाकर छुप गई. Similarly he is trying to show, why? Because I loved you so heartedly, but you never reciprocated me in the same manner, the way how I did it to you. Because of that, my love slowly vanished, slowly faded away. So, and it hid his face amid a crowd of stars. So, that is all about this poem. So, now let's move on to the summary. So, summary is that When You Are Old is a love poem addressed to the poet's beloved, that is Maud Gonne, who was the most beautiful young lady of his time. She is believed to be the inspiration behind this poem. The tone of the poem is one of melancholy. So here the poet is trying to imagine her future, and now the way what he is writing it now, when that lover will read this poem when she will get old, and she will realize that many of them came and gone, many of them came with to admire the physical beauty, but I really had a true lover to which I never, uh, but I didn't, I missed that chance to get to have a true love in my life. And at the end of the time she will realize that how love vanished slowly according to the time. She then opens the book, and she had innocent look in her eyes and sadness hidden in the look of her eyes. तो क्या होता है, जब वो आग के पास जाकर बैठकर, जब वो बूढ़ी हो चुकी होती है, वो आग के पास जाकर धीमे से अपना जो किताब है वो उठाकर खोलती है और उसको पढ़ती है, तो उसको फ्लैशबैक आता है मेमोरीज़ का, अपनी जवानी याद आ जाती है कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उन्हें, they admired for the physical beauty, they loved, whether it was true or false we don't know, but there was somebody who truly had a true love, who loved the soul, and which has unchanging, because according to the age, according to the time, it has unchanged love, and I missed that opportunity, so that she will realize and she will feel how love vanished slowly to the time. And so that is all about. So here the poet has tried to show his true intention while his beloved fails to understand. And that is all about. I hope you have understood. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, और कुछ भी अगर इम्प्रूवमेंट होना है, आई मीन when it is needed, कुछ सजेशंस देना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी लिख दीजिए. थैंक यू वेरी मच.